नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम संस्कृति यात्रा। आज की जर्नी के पहले जंक्शन विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं सदर्न इंडिया के एक बेहद खूबसूरत राज्य केरल, जिसे पूरी दुनिया गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानती है। यहाँ के खूबसूरत सी बीचेस, रिवर्स, लेक्स और बैकवाटर्स मिलकर इसे अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। कोच्चि से कोवलम तक यहाँ के बैकवाटर्स में चलती हाउस बोट्स और खुले समुद्र में तैरती फिशिंग बोट्स यहाँ के कल्चर का वाइटल पार्ट है। नो डाउट इस ट्रेडिशन को बनाए रखने में केरल के बोटमैन और फिशरमैन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है। फिशरमैन का पानी से केवल ब्रेड बटर का रिलेशन नहीं है, बल्कि पानी ही इनकी लाइफलाइन है। फिशिंग नेट्स को बनाने से लेकर फिशिंग के लिए सूटेबल मौसम की पहचान करने तक हर चीज एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, एक आर्ट फॉर्म है। तो आइए इस कम्युनिटी की लाइफस्टाइल को करीब से जानते हैं और देखते हैं फिल्म टर्निंग द टाइड, द फिशरमैन एंड बोटमैन ऑफ केरला के कुछ खास अंश। The backwaters are a maze of waterways in the southern Indian state of Kerala, stretching some 100 kilometers from Kochi to Kollam. They are composed of lagoons, rivers and canals lined with coconut groves, interspersed by tiny settlements where people go about their daily chores. Among the tourists, it is fondly known as the Venice of South. Fishermen and boatmen form the soul of this lovely landscape. The thought of propelling through the calm and picturesque backwaters is really exciting and romantic. But every now and then, the peace is shattered by the roar of a speedboat, reminding that these picturesque backwater lanes are host to a number of fishermen and boatmen. Meandering through the backwaters is perhaps the best way to watch the life and lifestyle of this coastal community. Extending inwards to Kottayam, Kerala's backwaters are a labyrinth of rivers, lakes and canals that are sandwiched between the Arabian Sea on the one side and the Western Ghats on the other. Life in this lush green wonderland is unhurried, devoid of the frantic pace that is so typical in Kerala's urban society. Cochin is Kerala's prime tourist destination. Sprang into being in 1341 when a mighty flood created a natural port and became the chief port along the Kerala coast. Predicting a rain is not easy in these coastal areas, particularly the Indian monsoon, which has a notorious reputation of being unpredictable. Thiruvananthapuram, the seat of Lord Vishnu, the Almighty Creator, is the place where the monsoon first hits India. As a prelude to a great performance, torrent winds play with palm trees and waves of the Arabian Sea rise and dance. They beat themselves to the rocks on the shore to provide rhythm to a great symphony which is to follow. A day may sometimes pass without any showers, but that does not ensure in any way of a rainless night. An overnight shower leaves behind a plethora of images which are reminiscent of heavenly paradigms. In the morning, raindrops are seen shining like pearls on the petals of the flowers. The nature could be seen at its benign and best. It is not a very happy omen for the fishermen though. As they reach the seashore in the morning, the signs of rain are generally there. The locals can easily predict rain as well as the weathermen. Still keeping a heart, hundreds of young fishermen could be seen pushing their boats into the sea with the mixed feelings, of course. Sky gives every indication that it is going to pour. And for the fishermen, it means that they cannot go deep into the sea for fishing. In such seasons, the sea is generally rough, the waves are turbulent, and the boatmen are cautious. This is one of their many occupational hazards. They generally have to fight the sea during their fishing operations. Sometimes the turbulent tides and sometimes the rain. As fishermen head towards the shore with their catch, women of the fisher folk wait for the men to return from the sea. And then at the shore itself, bidding starts for the catch. The highest bidder takes it all. And later the fish make their way to the fish market.
the unwanted matter stuck in the net is taken out and any wear and tear that might have happened during the usage is fixed. And if they get any time after that, a game of cards is always welcomed, though the fishing activity comes to a halt as the sun is about to set. But there are some fishermen who might choose to remain in the sea for longer periods. These fishermen carry lanterns with them in case they get late or decide to remain in the sea till late. The seashores and backwaters of Kerala not only have fishermen as the inhabitants, but a community of boatmen is also present here to take one through the colourful landscape of Kerala. As in case of fishermen, their livelihood is also attached to the boat, the sea and the backwaters. They are the proud movers of Kettuvallam. The Kettuvallam, a large floating structure with high load carrying capacity, was a part of Kerala's culture and heritage over the past years. For centuries, the Kettuvallam have been roaming in the backwaters, transporting men and materials to different destinations. Due to its sheer size and shape, Kettuvallam can carry load which is more than thrice that of a cargo truck. It was the important mode of transportation in coastal Kerala just because of its accessibility to the most remote areas. Kettuvallam could sail harnessing wind energy. A journey through the lagoon is interesting, passing through picturesque villages, busy boat jetties and vibrant life. The boat glides across the shimmering waters with gorgeous green and fringed edges. A decade after an innovative entrepreneur in Kollam district converted a traditional boat used for transporting goods to a houseboat with facilities for the stay of tourists, the industry has come of age. From 2 boats in the early 90s, the number of houseboats has now gone up to about 200. At first, traditional boats used to be converted into houseboats, but now very big ones are specially built as houseboats. The slow-moving Kettuvallam, splitting the serene backwaters, flanked by greenery, provide an enchanting experience to any visitor. Floating in these backwaters in a country craft, to explore the unusual representation of Kerala through the intricate maze of canals, conjures up a surreal existence devoid of any time sense. The boat races that usually take place during Onam in the backwaters and rivers of Kerala are the most spectacular glimpse of the boatmen in action. On the day of the festival, people in large numbers row their boats towards the site of the races. As this happens, one can be rest assured that a rare treat is in the offing. Every village sends a representation for the race, and then begins the most spectacular water sport of the country. Here, the skill of rowing of teams are tested and the best team of boatmen win. The boats primarily used in these races are Chundan Vallams. These dwellers of backwaters are not only masters with their rowing and fishing craft, but they also are craftsmen in true sense of the word. The testimony lies in watching these men at work. Ketuvallams and other traditional boats are made by joining together planks of wood with coir ropes. Not a single nail is used in the making of these boats. The wood used for making houseboats comes from the Angelina tree. It is the contemporary version of the Kettuvallam or boat with knots, the traditional country craft of Kerala. 80 feet long, these giant boats were once built by tying together massive planks of wood. These are constructed by tying together jackwood planks with coir rope and then coating these logs with a black resin-like substance made by boiling cashew nuts. This resin gives the boat its buoyancy and makes it extremely safe to sail on. Nails are not used in the making of these barges, but the traditional means of boat making still accomplishes quite a lot without the nails. Only the men have command over crafts. That is not the case. They have also trained their women in making of jute strings among other crafts.
In their spare time, it is very common for the women of the community to get together and make jute strings. It all starts with beating up the dried coconut shells. Slivers are obtained out of these and then start the tedious process of converting it into rope or a string. This effort requires a good teamwork. They begin with what is called drawing, which is a process for reducing sliver width and thickness by simultaneously mixing 4 to 6 sliver together. After drawing, the spinning process begins, in which slivers are elongated and fibers are twisted into yarn to impart strength. And finally, with their effort and skill, they are able to produce large amounts of strong jute strings. Fishermen and boatmen community of Kerala is not only rich in the crafts but also culturally very well off. They make sure to spare time to be a part of the festivities. Temple processions like this one are very common all across Kerala. These processions are usually led by majestic elephants decked with gold ornaments. A huge orchestra featuring as many as 100 drums, cymbals and other instruments follows. These processions leave its audience mesmerized and bring life in areas they go through at a standstill. The Onam festivities are an essential part of the fishermen community's life, as is of any other Keralite. The hard-working fishermen community takes a break and enjoys the cultural part of their life. Onam is the most important festival of the people of Kerala. It is the festival of flowers which falls in Chingam or Bhadrapada, usually in August or September. It is a harvest festival and goes for 4 colorful days with song and Kathakali dances, feasting and boat races. The festival lasts at least for 4 days. In many parts, it goes beyond that period and occupies 6 to 8 or even 10 days. Song and dance is not an alien element for them. It is not that they make merry in festival time only. They break into a song as and when they feel like it. In the fishing areas of Kanyakumari district, love is the dominant theme in the songs. In the majority of their songs, the names of fish figure. Through their songs, they also propose to consummate a marriage for the king of the ocean, the whale. This poetic imagination seems their submissiveness towards the mighty force of the sea. They treat the sea as sacred and attribute motherhood to it, and believe that mother would always warn them of any dangers lurking ahead. There are many beliefs. They believe that while sea sustains them, it can also harm them when offended. They use seawater as a purifier to ward off evil spirits. When the sea is rough, they say that God is awake, and when it is calm, God sleeps. Gales and storms are the fierce deep breath of God, and so on. The waters always bring surprises when you least expect it. And when tsunami struck, everything got washed away within the blink of the eye. Though most of the houses got eroded, they were built back on the seafront where they belonged. Government bodies and NGOs came forward to help rebuild a whole society. It was a mammoth task, but got done owing to the commitment of the people involved. People who had moved away to the other cities in search of livelihood started coming back once they saw hope. Now, a resurgent community which had seen the worst stands tall. Life here carries on. The backwaters are busy once again. A constant crisscross of heavily loaded boats transports all kind of goods again. Water lapses perilously close to the upper edges, but they don't flood. Boats ferry people across from one bank to the other. One can watch the locals bathing, washing their clothes, working, children frolicking. Life is happening as much on the water as ashore. अभी आपने देखी फिल्म बोटमैन ऑफ केरला, जो हमें बताती है कि कैसे फिशरमैन कम्युनिटी नेचर और कल्चर के साथ एक बैलेंस बनाकर जीवन जीते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट धरोहर की ओर। भारत की म्यूजिक ट्रेडिशंस, चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल हो या कार्नेटिक म्यूजिक,
इसमें कहीं ना कहीं डिवोशन का एक एलिमेंट होता है, या यूं कहें कि इस म्यूजिक की रूट्स में ही स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन है। तभी तो ये क्लासिकल वॉइसेस हमारे कानों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाती हैं। और ऐसी ही एक वॉइस हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो है कार्नेटिक म्यूजिक की जानी मानी गायिका सुधा रघुरामन। संगीत परिवार में जन्मी सुधा रघुरामन जितनी अच्छी वोकलिस्ट हैं, उतनी ही परफेक्ट वॉयलिनिस्ट भी हैं। तो आइए आज उनसे सुनते हैं अभंग, जो कि महाराष्ट्र की सेंट ट्रेडिशन से जुड़ी एक डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म है। अभंग में बड़ी ही साधारण भाषा में भगवान विट्ठल के लिए अपनी फीलिंग्स और डेडिकेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। आइए सुनते हैं सुधा रघुरामन जी की आवाज में एक बेहद सुंदर अभंग प्रस्तुति। वृंदावनी 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 वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वेणु कवनाचा माय वाजे वेणु कवनाचा माय वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वेणु कवनाचा माय वाजे वेणु कवनाचा माय वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु कुछ पसरूनी मयूर विराजे ओ कुछ पसरूनी मयूर विराजे ओ कुछ पसरूनी मयूर विराजे कुछ पसरूनी मयूर विराजे मजा पाघात भासाती यादव राजे मजा पाघात भासाती यादव राजे राजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वेणु कवनाचा माय वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वेणु नादे गोवर्धनु वाजे वृंदावनी वेणु वृंदावनी ऋण चारा चारू विसारली ऋण चारा चारू विसारली ऋण चारा चारू विसारली ऋण चारा चारू विसारली गाई व्याघ्र एके ठाई झाली गाई व्याघ्र एके ठाई झाली पक्षी कुळे निवांत राहिली पक्षी कुळे निवांत राहिली वैरभावा समो
वैरभाव समुग विसरली वृंदावनी वेणुवाजे वृंदावनी सुधा रघुरामन जी की डिवोशनल प्रेजेंटेशन से आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। और इस सेगमेंट के तहत हम आपको लेकर चलते हैं भारत के उन गांवों की ओर जहां आज भी हमारे फोक ट्रेडिशंस जीवित हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका फोकस है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना ताकि हमारी विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी कड़ी में आज हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित गंगा के किनारे बसे खूबसूरत गांव सोमरा। सोमरा जो अपने टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सोमरा गांव में एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आनंदमयी मंदिर, सिद्धेश्वरी और हरा सुंदरी मंदिर प्रमुख हैं। तो आइए चलते हैं सोमरा गांव की ओर। सोमरा गंगा किनारे बसा एक सुंदर गांव जो अपने टेराकोटा मंदिरों और संस्कृति के लिए चारों ओर प्रसिद्ध है। सोमरा गांव में अनेक दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जिनमें आनंदामाई मंदिर सबसे प्रमुख है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा यह मंदिर 1663 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो मां आनंदमयी का मुख्य मंदिर है। मंदिर की दीवारों को जटिल टेराकोटा डिजाइन से सजाया गया है, जो पर्यटकों को एक सुंदर अनुभव प्रदान करती है। सोमरा का सिद्धेश्वरी मंदिर एक और प्रमुख मंदिर है, जहां हर साल दूर दूर से दर्शनार्थी यहां दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या के दौरान देवी की पूजा की जाती है। इस मंदिर से एक विशाल वट वृक्ष भी जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से छाया प्रदान कर रहा है। गांव का सबसे प्रमुख उत्सव मनसा पूजा है, जिसमें सभी महिलाएं एकत्रित होकर मां मनसा की पूजा करती हैं और उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग चढ़ाया जाता है। यह पूजा हर वर्ष जून जुलाई के महीने में शनिवार या मंगलवार के दिन की जाती है। सोमरा की सांस्कृतिक धरोहर को देखने आइए, यहाँ के भव्य मंदिरों के दर्शन करने आइए। सोमरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सजेशंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर हाँ, आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। नमस्कार। IGNCA में साहित्य, संस्कृति और विचारों का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था प्रसिद्ध नृत्य गुरु, पूर्व राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर सोनल मानसिंह की पुस्तक अ जिगजैग माइंड पर विशेष चर्चा का आयोजन। तो आई थिंक समवेयर ये जो आर्टिस्ट की जिद है ना कि बीमार है तब भी हमें कार्यक्रम करना है, पैर दुख रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन कार्यक्रम करना है और कैसे करना है, टू द बेस्टेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ये जिद बड़ी काम आती है। तो मैं माचू पिचू गई, उसको पहले 14,000 फीट पे, 14 या 12,000 फीट पे। तो वहाँ मैंने मेयर और 20 लोगों को लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, कुछ मुद्राएं सिखा दी। उसके बाद जो ट्रेन जाती है 2,000 फीट, यूं, it can't go like that. Zig-zag. But it takes you to the destination. That is important. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। पुस्तक के बारे में मैं कहूँगा कि एक कलाकार की ये जीवन यात्रा है, एक साधक की अंतर यात्रा है और एक नागरिक की संस्कृति सेवा यात्रा का जीवंत संग्रह है। इस पुस्तक में दक्षता, संघर्ष और दर्शन का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले। How can she be zigzag mind? Her mind may be zigzag, but her steps have never been zigzag. As a dancer, Shiva or Parvati
राधा और कृष्ण उनके कदम मंच पर नृत्य करते हुए हम देखते हैं। वहीं लेखक और समाजसेवी संदीप भुतोड़िया ने पुस्तक के महत्व और उसके कल्चरल रेलेवेंस पर प्रकाश डाला। ये महत्वपूर्ण पुस्तक या लेखों का ग्रंथ जिगजैग माइंड श्रद्धेय डॉक्टर मान सिंह जी के विशिष्ट कला अनुभवों का मनमोहक संग्रह है। इस पुस्तक में निहित अनुभव पाठकों को अपनी जीवन यात्रा को खूबसूरत बनाने का पथ सुझाने के साथ साथ जीवन को समग्रता में देखना, इसके सौंदर्य को निरखना और अनुभूत करना तो सिखाते ही हैं। पुस्तक जीवन में ही निहित रस का आनंद लेने के साथ ही उदात्त का दर्शन कर उसे सार्थक बनाने का मार्ग भी सुझाते हैं। आयोजन की अध्यक्षता IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। So why this book is very important, we must understand that the title of this book itself says all, Zigzag Mind. It does not only explains the life and the journey of Dr. Sonal Mansingh, but also gives you a very nice repertoire of the cultural scene in the country during her time. यह कार्यक्रम सिर्फ पुस्तक चर्चा भर नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा और चिंतन का एक सुंदर अवसर भी बना।